A very warm welcome to Founder Trustee Shri Suresh Bhai Oza, Managing Trustee Shri Jairaj Thakkar, Trustees Srimati Urvashi Thakkar, Shri Jayesh Thakkar, Srimati Shivangi Thakkar, Shri Sujay Jairaj and Srimati Meenal Thakkar, core teams of JNS and JNIS, JN PTA team, NYA team, parents, teachers and students. We wish you a very happy Independence Day. A very good morning to one and all present here. Over the last year, we at Jamnabai Narsi School and Jamnabai Narsi International School have displayed unwavering courage and strength, coupled with continued commitment to growth, as symbolized by the colors of our national flag. In the true sense, we have embodied the variant colors of independence. The Indian national flag is a symbol of our independence. Thus, seeing the tricolour claim the sky in all its glory evokes within us strong sentiments. Hearts filled with such devotion, I request you to stand as the national flag is hoisted, accompanied by the rendition of the national anthem. अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. We welcome you to a celebration of the colorful vibrance of India's unique culture. Our independence came at a cost. The school band will now honor the countless sacrifices, without which we wouldn't be the proud citizens of a free nation today, through its rendition of the evergreen patriotic song, Aao Bachcho Tumhe Dikhaye. It is now time to remind ourselves of the allegiance we owe to our country and our fellow citizens. I request you to stand, raise your right hand and join us in taking the pledge.
India is my country. All Indians are my brothers and sisters. I love my country and I am proud of its rich and varied heritage. I shall always strive to be worthy of it. I shall give my parents, teachers and all elders respect and treat everyone with courtesy. To my country and my people, I pledge my devotion. In their well-being and prosperity alone lies my happiness. The National Cadet Corps makes an immense contribution to nation building by instilling in our youth the values of discipline, dedication, and selfless service, so essential for sustaining the spirited interplay of the vibrant colors of independence. Students of the NCC are requested to join in as Mr. Nilesh Carvalho takes the oath. मैं शपथ लेता हूं कि मैं अपने देश की रक्षा करूंगा तथा नेशनल कैडेट कोर के नियमों और अधिनियमों का पालन करूंगा और अपने कमांडिंग ऑफिसर के आदेश के अनुसार सभी कैंप और परेड में पूरी शक्ति के साथ शामिल रहूंगा। जय हिंद। The Jamnabai Adolescent Mentor Program selects peer mentors from grades 9 to 12 who can guide their schoolmates to exercise their freedom to make responsible decisions that empower not just themselves but the school community at large. Ms. Dipta Parikh and Ms. Desiree Dias will announce the names of the newly appointed peer mentors of GNS, and Mr. Michael Gramlich will announce the names of the peer mentors for GNIS. It gives me great pleasure to announce the names of the Jamnabai Adolescent Mentors for grade 11 of the ISC for the year 2021-2023. Meher Chawla, 11A. Tanushri Jain, 11A. Mehak Javeri, 11B. Mitanshi Mehta, 11B. Netra Neelakantan, 11B. Akash Modi, 11C. Sana Rao, 11C. Sharanya Hundalani, 11C. Kareen Mirza, 11D. Zayan D'Souza, 11E. Khushi Jaiswani, 11E. Ojas Kumar, 11F. Rajveer Shah, 11F. Iman Gubitra, 11G. Ritika Gilda, 11G. Congratulations, students, and thank you. It gives me immense pleasure to announce the names of the Jamnabai Adolescent Mentors for grade 9 of the ICSE for the years 2021-2023. Advait Sangvi, 9D. Krisha Kantharia, 9E. Gautamveer Singh Bhatia, 9F. Simar Kohli, 9G. We also have Prisha Jaswa, 9A. Viha Desai, 9B. Safana Halai, 9B. And Naisa Jain, 9C. Congratulations, students. Thank you. Good morning, everyone, and a very happy Independence Day to everyone in the Jamnabai community. It is my pleasure this morning to introduce the 2021 to 2023 JNIS JAM members. Starting with IBDP students, congratulations to Arman Chabra. Congratulations to Ishita Kapadia.
Congratulations, Livana Khanna. Manveer Shah. Maulin Tucker. Nisa Goenka. Nishi Parekh. Congratulations to Pia Magnani. Congratulations to Pratam Shah. Priyansha Agarwal. Rishma Kakar. Sanjiti Saha. Sedal Naki. And Tane Kumar. Vivid Makajan. From our grade 9 class, congratulations to Ira Gupta. Congratulations also to Anand Vora. Avani Bansal. Karanveer Shroff. Manav Mehta. Naira Siddiqui. Sana Agarwal. Tashvi Kapoor. And Trisha Vernikar. Once again, congratulations to all of those successful JAM applicants, and we're certain that you will all make us proud. Thank you very much. India stands strongly united due to the colors of happiness, pride, and unity. I now invite Riya Agarwal from Jamnabai Nursi International School to share her musings on our theme, the variant colors of independence. Today, we salute India, a place where each bud blooms in its true colors, and a place where each day is a celebration of unity, harmony, and synthesis. It gives me the greatest pleasure to wish everyone gathered here today a happy 75th Independence Day. In the 75 years of being an independent nation, India has faced a plethora of challenges to become the strong and powerful nation it is today. Through all of this, the spirit and beauty of India has been brought to life with a large variety of sights, sounds, and colors. The magnificence of the Indian culture and the diversity of the Indian people are only matched by the vibrant colors of India's traditions, and these colors have played an essential role in forming India's identity. Color in India does not resonate with one meaning only. It is open to an array of interpretations. They resemble symbols of emotions that have a unique significance in the various regional divides of the country. Right from the north all the way to the south, the expression of colors amalgamate the various traditions, lifestyles, and outlooks that are found in our country. The royal gold of majestic Rajasthan, the pastel tones of southern India, the exuberant hues of the northern border, and the warm, bright colors of the east offer a kaleidoscope for insight into the history and modernism of India. To end, I would like to say this Independence Day, we remember the India that stands so strongly united in a world so divided. And we remember that the colors that hold it together are the colors of happiness, pride, and love.
feelings that overcome all differences. While we live in a country so diverse, color not only allows the Indian people to freely express themselves, but also brings the people together to build a nation stronger than ever before. Thank you. थैंक यू रिया। हमारे देश का सौंदर्य उसके कण कण में समाया है। तिरंगे ने तो उसके विभिन्न रूप को हर ढंग से दर्शाया है। आई इनवाइट रौनक शर्मा ऑफ स्टैंडर्ड 10 टू शेयर हिज थॉट्स इन हिंदी। इलाही वो भी दिन होगा जब अपना राज देखेंगे, तब अपनी ही ज़मीं होगी, अपना ही आसमां होगा। जी हाँ, आज भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बोस और अशफाक जैसे क्रांतिवीरों के आज़ाद भारत के सपने को साकार हुए कुल 74 वर्ष पूरे हो चुके हैं। आज आज़ादी की 75वीं गौरवशाली प्रभात बेला में पदार्पण करते हुए मैं रौनक शर्मा सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज आज़ादी के विविध इंद्रधनुषी वर्षों का स्मरण करते हुए हर्षित होकर मेरा मन गा रहा है। कौन बांध पाया है उस परिंदे को जो सोने की चिड़िया कहलाती है, जहाँ कई मजहबों और अनेक जातियों की आबादी एक तिरंगे तले जन गण मन गाती है। मित्रों, हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने आज़ाद भारत में जन्म लिया, जहाँ हमें चिंतन, अभिव्यक्ति और कार्य करने की स्वतंत्रता है। आपको याद होगा आर्य फॉरेस्ट की वो घटना जिसकी याचिका कई बार खारिज होने के बावजूद देश की जनता की आवाज़ आर्य बचाओ अभियान में बुलंद रही और अंततः सफल भी हुई। इतना ही नहीं, किसान आंदोलन और गोवा में कोयले के खिलाफ आंदोलन भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सशक्त उदाहरण है। कहने का तात्पर्य यह है कि भारत का प्रत्येक नागरिक कहानी, कविता, गीत, सोशल मीडिया इत्यादि के माध्यम से जन जन तक अपने विचारों को पहुंचाने के लिए आज़ाद है। इसका जीवंत उदाहरण लखनऊ की सबिका अब्बास जी हैं, जो सामाजिक समस्याओं को अपनी कविता में पिरोती हैं और चौराहे पर खड़ी हों पढ़ती हैं ताकि उनके विचार लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों, आज का भारत वो भारत नहीं जहां राजा का बेटा राजा बने, बल्कि राजा वही बनता है जो उस पद का हकदार हो, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण IAS अफसर प्रांजल पाटिल जी हैं, जो नेत्रहीन हैं, और उड़ीसा में वित्तीय कर अधिकारी के रूप में आयुक्त ऐश्वर्य प्रधान तीसरे लिंग से हैं। साथियों, ये कहते हुए मेरी छाती गर्व से फूल उठती है कि लीला की क्षमता सिर्फ भारत माता की प्रकृति में ही नहीं, बल्कि यहाँ के विभिन्न धर्मों, जातियों, संप्रदायों, अनगिनत त्योहारों, बोलियों एवं भाषाओं में भी देखने को मिलती है, जिसे पूरा हिंदुस्तान एकजुट होकर मनाता है और जीता है। इसी अनेकता में एकता का ज्वलंत उदाहरण हमारा अपना विद्यालय जमनाबाई नरसी स्कूल भी है, जहां शिक्षक और विद्यार्थी रूपी अनेक रंग फैले हैं, जिनका ध्येय केवल देश की प्रगति में 4 चांद लगाना है और विश्व रूपी आकाश में तिरंगे को फहराना है। इसीलिए जमनाबाई का हर बच्चा कहता है, भारत माता के हम बच्चे, हम ही इसकी आन, तिरंगे के रंगों की हम बनेंगे शान। चलो शपथ ले संग चलेंगे, माँ के हित हर कर्म करेंगे, ध्यान रखेंगे मानवता का, जनता की ममता समता का। इसी भाव को धारण कर जिएंगे जीवन महान, भारत माता के हम बच्चे, हम ही इसकी आन, हम ही इसकी आन साथियों, हम ही इसकी शान। जय हिंद, जय भारत। Thank you, Ronak. Anagha Shah of Standard 7 will now talk about how it was that India decked herself up in the colors of the hopes and aspirations of her people on the attainment of independence. रंग मारा तिरंगानी शाननो, रंग मारा सरदारनी एकतानो, रंग मारा गांधी बापूनी सत्यतानो, रंग आपणी आजादीना उमंगनो। હા, રાજકીય આઝાદી મળી 15મી ઓગસ્ટ 1947ના દિવસે મુક્ત હવા અને અન્યાય વગરના વાતાવરણના રંગે દેશ આખો રંગાયો. આપણે માનસિક ગુલામીમાંથી મુક્ત થયા અને વેલફેર સ્ટેટના સિદ્ધાંતના રંગને અપનાવ્યો. સાચે જ
ધાર્મિક, સામાજિક, આર્થિક, શૈક્ષણિક દરેક ક્ષેત્રે આઝાદી પછીના બદલાતા વિવિધ રંગના દર્શન થાય છે. રાષ્ટ્રભાષા, રાજ્યભાષા અને માતૃભાષા શીખવાડના રંગ તરફ જાગૃતિ મેળવી. હરિયાળી ક્રાંતિના રંગથી ભારત આત્મનિર્ભર બન્યો. સર્વના સ્વીકારના રંગ તરફ ડગ ભર્યા. અંધધર્મ અને વિપરીત ધર્મને બદલે સાચા ધર્મને શોધી યુવાનો વિવેકાનંદના આદર્શના રંગમાં રંગાયા. આઝાદીના જુદા જુદા રંગો દ્વારા ભારતે દેશમાં વિવિધતા સાથે એકતાની સુગંધ મહેકાવી. મિત્રો, તે જોવા મળે છે દિવાળીના રંગોમાં, ઉત્તરાયણની પતંગોમાં, હોળીના વિવિધ રંગમાં, તિરંગાના શ્વેત શાંતિના રંગમાં, દેશભક્તિ અને બલિદાનના કેસરીના રંગમાં, અને મારા તમારા શરીરમાં ફરતા લાલ રંગમાંના લોહીમાં. હું મારી શાળામાં ઇતિહાસ, ભૂગોળ, ગણિત શીખી છું, પણ પ્રથમ રાષ્ટ્રભક્તિ શીખી છું. હજી મંઝિલ ઘણી લાંબી છે. આ રંગમાં પ્રત્યેક ભારતવાસીને રંગવાનો છે. આ સુજલામ સુફલામ ધરતીને વિશ્વમાં સુયશ અપાવવાનો છે. તેથી છેલ્લે એટલું જ કહીશ, વેશ જુદા છે, પ્રદેશ જુદા, ધર્મો જુદા, નામ, કુળ, જાતિ પણ જુદા, પણ માનવતા એક છે, દેશ એક છે, બધાનો આત્મા નેક છે, અને જીવીએ દેશ માટે. એ જ અમારી ટેક છે, એ જ અમારી ટેક છે. જય હિન્દ. थँक यू अनघा. रंगांचे वैविध्य बघायचे असेल तर जगात भारतासारखा दुसरा देश नाही. आता मराठी भाषणातून भारताचा दानाचा रंग दाखवण्यासाठी येत आहे इयत्ता 3रीचा अगस्त्य गानू. नमस्कार. लोकांचे, लोकांद्वारे, लोकांसाठीचे राज्य म्हणजेच लोकशाही राज्य. अब्राहम लिंकन यांच्या लोकप्रिय आणि सुप्रसिद्ध वाक्यानुरूप जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाही असलेल्या भारत देशाच्या भूमीवरून जमनाबाई शाळेच्या अगस्त्य गानूचा आपला सर्वांना नमस्कार. या लोकशाहीच्या विचारांबद्दल आपण गेले 75 वर्षे अनेक गोष्टी ऐकल्या, पाहिल्या. सध्याच्या काळात लोकांद्वारेच आपल्या या मोठ्या लोकशाही राष्ट्रात आनंद देणाऱ्या वास्तविक घडलेल्या 2 घटना ऐका. अक्षय कोठावळे पुण्याचा एक गरीब तरुण, रिक्षा चालवून आपले पोट भरणारा, ज्याने काटकसर करून स्वतःचे लग्न थाटामाटात करण्यासाठी दिवस रात्र रिक्षा चालवून पैसे जमा केले. पण त्याने बदललेल्या परिस्थितीनुसार आपले विचार बदलले आणि हे जमवलेल्या सर्व पैशांचा उपयोग अन्नदान हे महादान लक्षात घेऊन गरिबांना अन्नदान केले, ज्यामुळे अनेक कुटुंबांची उपासमार टळली. अशा प्रकारे सर्वत्र आजही वेगवेगळ्या प्रकारे दानाची प्रक्रिया चालूच आहे. अशीच प्रक्रिया करताना जिशान, शैजान आणि जुलैशान या तरुणांचे लक्ष नवजात बालकांकडे गेले आणि त्यांनी मिशन मिल्कची सुरुवात केली. या कार्यात सहयोग करणाऱ्यांचे मिल्क एंजल्स असे नामकरण केले. या कार्यानंतर भरपूर मिल्क एंजल्स सामील झाले आणि आतापर्यंत हजारो लिटर दुधाची वाटप झाली, ज्या कारणाने कितीतरी कुटुंबांमध्ये आनंदाची लहर उमटली. मित्रांनो,
आपल्या स्वतंत्र भारतात अशा प्रकारच्या मानवतेचे विविध रंग पसरलेले आहे. एवढेच नव्हे तर आपल्या भारतात जिथे बोलण्याचे स्वातंत्र्य आहे, विचारांचे स्वातंत्र्य आहे, आचारांचे स्वातंत्र्य आहे, तिथेच आपण आपल्या कर्तव्याची जाणीव ठेवू अशी प्रार्थना करूया. अशा या अनेकतेत एकता असणाऱ्या भारत भूला अनेकवार वंदन आणि भारतीयांच्या सत्कार्याचे त्रिवार अभिनंदन. जय हिंद. Thank you, Agastya. We bow down to a country blessed with beautiful voices and ornamented with diversity and unity. We now present a dance filled with devotion and love for the nation. भारत अनोखा राग है, सौरागिनियों से सजा भारत अनोखा राग है. सौरागिनियों से सजा भारत अनोखा राग है. ये प्यार का संगीत है, ये शांति का गीत है, ये एकता का राग है. भारत अनोखा राग है. सौरागिनियों से सजा भारत अनोखा राग है, अनोखा राग है. भारत के इस एक तारे पे गूंज है जो जो रागिनी, सब मिल गई एक धुन बनी. इस धुन में गाना एक है, इस धुन का एक है. ये राग सबका राग है, भारत अनोखा राग Thank you for that reminder of the fact that it is diversity of every kind that defines independent India's unique essence. When myriad different hues come together, a picture cannot help but come alive. In our next performance, graceful young dancers come together to celebrate the beauty in variance.
freedom, give me fire, give me reason, take me higher. See the champion, take the field now. Unify us, make us feel proud. In the streets our heads are lifting as we lose our inhibition. Celebration, it surrounds us. Every nation, all around us. Sing forever young, singing songs underneath the sun. Let's rejoice in the beautiful game. And together at the end of the day, we all say, when I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. So wave your flag, now wave your flag, now wave your flag. Oh, 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 we all say, when I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. So wave your flag, now 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 wave your flag, wave your flag. And everybody will be singing, yeah. And we all will be singing, yeah. That truly was poetry in motion. The Indian Music Group will now present a medley of songs that brings alive the shades of courage, resilience, determination, fearlessness, and hope that breathe life into the vision of independent India. हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तुम ही भविष्य हो मेरे भारत विशाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, सर झुका
आजादी की जंग बेखौफ आजाद है जीना मुझे बेखौफ आजाद है रहना मुझे बेखौफ आजाद है जीना मुझे बेखौफ आजाद है रहना मुझे अपने हो या पराए सबके लिए हो न्याय अपने हो या पराए सबके लिए हो न्याय देखो कदम तुम्हारा हरगिज न डगमगाए रास्ते बड़े कठिन है चलना संभल संभल के इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के ये देश है तुम्हारा नेता तुम्ही हो कल के ये देश है तुम्हारा नेता तुम्ही हो कल के ये देश है तुम्हारा नेता तुम्ही हो कल के दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान है Keeping this spirit alive, the PYP students of JNIS would like to present a dance showcasing love and respect for the varied colors of our independent India. Hello, good morning. Good morning, sir. What are you painting? We are coloring the symbol of our pride and national flag. Wow, it looks beautiful. I was just wondering about the significance of these colors. I can share with you the true meaning of these colors. Oh, thank you. That's so kind of you. The top saffron color indicates the strength and courage of our country. The white middle band indicates peace and truth with the Dharam Chakra. The green shows the fertility and growth of the land. Huh? Do you know why we call it our pride? Come on, let's see. आन देश की शान देश की हम संतान हैं, तीन रंग से रंगा तिरंगा अपनी ये पहचान है। जय हिंद। तलवारों पे सर वार दिए अंगारों में जिस्म चलाया है तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। जहाँ डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती है बसेरा वो भारत देश है मेरा वो भारत देश है मेरा। ऐ मेरे प्यारे वतन ऐ मेरे बिछड़े चमन तुझ पे दिल कुर्बान तुझ पे दिल कुर्बान। ये तेरे वीर जवानों का लबेलों का मस्तानों का इस देश का यारों क्या कहना ये देश है दुनिया का गहना।
Thank you for that melodious rendition. सच में भारत एक अनोखा राग है. Students of Standard 9 will now present Azadi Ke Anek Rang, the variant colors of freedom, a song that celebrates the different manifestations of freedom that we as citizens of independent India enjoy. Freedom as many in the world don't have it too. You are not bound by strings, not told what to speak or think. Your wings aren't clipped, my dear, you can fly off without a blink. देश की सरहद पर है हमारे पहले दाग, उनके बलिदानों के लिए कौन है जवाबदार? संभाल कर रखो, मिली है अद्भुत सी आजादी, देश पर मर मिटने वालों के कारण ये आजादी. Beneath the billion faces is the single color of love. We love our country, India. United we rise above. We have the gift of freedom, wherein colors we enjoy. Don't misuse this freedom. Diversity we can't destroy. इस आजादी को जानो, सही मायने में पहचानो. भाषाओं की, ज्ञान की, सच बोलने की आजादी. जागो और समझो क्या खूबसूरत ये आजादी. खुले आसमान, चांद, सितारों के नीचे ये आजादी. यो प्यारा प्यारा देश हमारा, सबसे न्यारा भारत प्यारा, शान हमारा, नाज हमारा, दुनिया का गुलशन है. प्यारा प्यारा देश हमारा, सबसे न्यारा भारत प्यारा, शान हमारा, नाज हमारा, हिंदुस्तान हमारा है. As we draw the curtains on today's event, we would like to express our sincere gratitude to Managing Trustee Sri Jairaj Thakkar and the Board of Trustees for their unwavering support in every endeavor. We would also like to thank the teams of GNS and GNIS who continue to inspire us with their zeal and commitment. Many thanks to all those who put up beautiful performances, making today's event truly colorful. Lastly, thank you all for being an appreciative audience.
As we take your leave, we would like to wish you a very happy Independence Day once again and urge you to exercise your freedom with discretion.